اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی رب زدنی علما. Miss Asha is the favorite teacher of class 9. Miss Asha جماعت نام کی پسندیدہ استانی ہے. The students eagerly attend her class. Students شوق سے اس کی کلاس میں شامل ہوتے ہیں. Miss Asha enters the class with her usual smile. Miss Asha معمول کی مسکراہٹ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوتی ہے. Greets the student, طلباء کو سلام کرتی ہے. And takes the roll call اور حاضری لیتی ہے. It is their tutorial day. ان کا ٹیوٹوریل ڈے ہے. The students are all geared up. Students تمام تیار ہیں. They know what is about to come. وہ جانتے ہیں کہ کیا رونما ہونے والا ہے. And they are prepared for it. اور وہ اس کے لیے تیار ہیں. Shall we start? کیا ہم شروع کریں؟ She asks politely. وہ شائستگی سے پوچھتی ہے. Yes. The student nod. ہاں. Student اس بات میں سر ہلاتے ہیں. Teacher, okay, as we have decided earlier. استانی, okay, جیسا کہ ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں. The topic for today's discussion, آج کی گفتگو کا عنوان is role of media and its impact. میڈیا کا کردار اور اس کا اثر ہے. To start with, آغاز میں let me state clearly, مجھے واضح طور پر کہنے دو that media is the most powerful mode of communication, کہ میڈیا ابلاغ کا طاقتور ترین ذریعہ ہے. It shares news and information with the people. یہ لوگوں کے ساتھ خبریں اور معلومات مل جل کر استعمال کرتا ہے. Sometimes media spreads false news. بعض اوقات میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا دیتا ہے. But generally it informs us about the facts around us. لیکن عموماً یہ ہمیں ہمارے ارد گرد حقائق سے آگاہ کرتا ہے. Do you agree? کیا آپ متفق ہیں؟ Students, yes we do. Students, ہاں ہم متفق ہیں. Student 1, I would like to add a bit more to it. Student 1, میں اس میں تھوڑا مزید اضافہ کرنا پسند کروں گا. Teacher, yes sure. Teacher, ہاں یقیناً. Student 1, media helps people to share knowledge of the world. Student 1, میڈیا دنیا کا علم مل جل کر استعمال کرنے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. Their feelings and opinions are expressed through it. ان کے احساسات اور آراء اس کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں. Media attracts the attention of a very large audience. میڈیا بہت زیادہ سامعین کی توجہ حاصل کرتا ہے. Have you noticed? کیا کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے that the first thing we do soon after entering the house, کہ گھر میں داخل ہونے کے فوری بعد پہلا کام جو ہم کرتے ہیں is to switch on the television. وہ ٹیلی ویژن آن کرنا ہے. Teacher, there is no doubt about it. Teacher, اس میں کوئی شک نہیں ہے. Student 2, let me say. Student 2, مجھے کہنے دو that media has become a part of our life, کہ میڈیا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. It not only informs us but also entertains us. یہ نہ صرف ہمیں باخبر رکھتا ہے بلکہ ہمیں محظوظ بھی کرتا ہے. Teacher, absolutely right. Teacher, بالکل ٹھیک. Well, do you have any idea about the two major means of communication? اچھا, کیا آپ کو دو بڑے ذرائع ابلاغ کے بارے میں کوئی ادراک ہے؟
Student 3, there are two means of communication. Student 3, दो ज़राए अबलाग हैं, electronic media and print media. Electronic media और print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. Media में film, radio, television, internet, कुतुब, रसाले और अखबारात शामिल हैं. It provides us information as well as entertainment. ये हमें मालूमात और तफरीह मुहैया करता है. टीचर, गुड, इट्स थ्रू मीडिया. टीचर, खूब, ये मीडिया ही की बदौलत है दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि दुनिया आलमी मौजा बन चुकी है. देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन. टेलीविजन पर दुनिया के तमाम आम वाक़ियात की नशर तशहीर होती है. वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया. हम मीडिया के जरिए तमाम इकसाम की मालूमात तक एक आसान रसाई हासिल कर सकते हैं. Student 4, can we say, Student 4, क्या हम कह सकते हैं that the world is just a click away, कि दुनिया एक क्लिक के फासले पर है. टीचर, maybe. टीचर, शायद. Well, would any other student like to say something on it? अच्छा, क्या कोई और तालिब इल्म इस पर कुछ कहना पसंद करेगा? मिस आयशा points to the student sitting at the end. मिस आयशा आखिर में बैठे हुए स्टूडेंट की तरफ इशारा करती हैं. Student 5, मैडम, in my opinion. Student, मैडम, मेरी राय में मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी. मीडिया माशरे के लिए बहुत अमीरी किरदार अदा करता है. इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये कई समाजी मसाइल मसलन बदनवानी, दहशत गर्दी, मुनशियात की आदत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के मुतालिक शऊर उजागर करता है. टीचर, यस यू आर राइट. टीचर, हाँ आप दुरुस्त हैं. स्टूडेंट 6, मीडिया हैज ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन. स्टूडेंट 6, मीडिया मजलूमों का तर्जुमान बन चुका है. टीचर, यस वेल सेड. टीचर, हाँ खूब कहा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत ना होगा दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, कि मीडिया सबसे ज्यादा चौकस अदारा है दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो माशरे के हर तबके पर नजर रखता है. थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज, मुज़ाकरों, रिपोर्टों और मुबाहिसों के जरिए इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, ये हर एक को जवाबदेह और काबिल बाज़पुर्स बना देता है. That is why, यही वजह है, मीडिया हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. मीडिया हमारी जिंदगियों का अटूट अंग बन चुका है. Now I would invite one of you to sum up the discussion. अब मैं तुम में से एक को गुफ्तगू का खुलासा बयान करने की दावत देती हूँ. Student 1, I would conclude the discussion by saying, मैं ये कहते हुए गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा that media can play a positive role, कि मीडिया मुस्बत किरदार अदा कर सकता है and has a corrective impact, और इसकी इस्लाही तासीर है if it works honestly, अगर ये ध्यानदारी से काम करे. टीचर, गुड कंक्लूजन. टीचर, अच्छा अखज़ करदा नतीजा. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप तमाम ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया है एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्स वेरी वेल, और बहुत अच्छे तरीके से अपना इजहार किया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव द बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह ब्लेस यू. आमीन.